Good morning, everyone. Welcome to today's session. And how was your Holi? How's everyone? सब ठीक है? First of all, tell me whether my voice is clear and is this screen clearly visible to all of you? विनय, आप अकेले नहीं हो, सबने गुजिया बनाई है, ठीक है? चलो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने होली में भी पढ़ाई करी? हाय विजय। चलो, so we'll be doing 21st March current affairs today. Okay, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, but some of the important reports are here. So we'll be doing apart from obviously economic news. तो एक तो happiness report की थोड़ी बहुत statistic है, ठीक है? And we also have this report that came in, in this news, and that was released by Ministry of New and Renewable Energy with respect to solar waste. तो वो भी बहुत important है because we all know that how much sustainable development and environmental issues are a very touchy topic with respect to any examination, चाहे कोई भी उठा लो. Okay, so उस report को भी ध्यान से कर लेना, और उस report को we will be able to utilize in descriptive and various other platforms. ठीक है, तो वो we will see about it. So first news is regarding RBI monthly bulletin highlights. तो हर महीने निकलती है, and this is the first time I'm introducing this because RBI is thinking about increasing the projection for growth rate, especially in the financial year 25 domain. ठीक है, हम सबको पता है कि in context of financial year 24, what was the projection or what's the current projection of Reserve Bank of India? Everyone, उन्होंने बढ़ा के कितना बढ़ा दिया? करंट प्रोजेक्शन कितना है? एवरीवन, yes, close to 8%. That's what the governor was saying recently, especially in some summit or conference. Okay, and that was increased from 7.6%. तो ये तो 8% financial year 24 का है. What about financial year 25? financial year 25 के केस में क्या था? 7%. Yes, correct. ठीक है, and this 7% was already told by the governor, especially at what place? And they told about this projection in the recent monetary policy committee meeting, है ना? But if you look at the bulletin news and if you look at whatever the news that are over there also, they have an internal macroeconomic framework model. So which the model came out to be, the model told that financial year 25 growth rate shall also increase by 40 basis points. So if you see here, that's what they are suggesting. Projections for financial year 24-25 suggested robust GDP growth at 7.4% based on in-house DSG model. तो RBI का in-house DSG model है, ठीक है, that is telling us that there will be 7.4% growth rate in the next or upcoming financial year. So this is an indication that what you must expect from the upcoming monetary policy committee, or you can say the first monetary policy committee meeting of financial year 25, which will happen on, कब होगी किसी को आइडिया? Usually it happens on the 8th of every second month. तो फेब में ये अब कब होगी? अप्रैल में होगी, है ना? तो 8 अप्रैल के आसपास, 8 से 10 के बीच.
they'll be conducting this meeting. Okay, so this is what you can expect. At least in-house they are saying 7.4%. तो official भी बोल ही देंगे थोड़े दिनों बाद. But at least just keep this in mind. And apart from that, the data is also present with respect to real per capita income, which has increased 1.5 times since 2011-12 at a compounded annual growth rate of 4%. ठीक है, तो अभी एग्जाम पास आने वाला है, तो सच टाइप ऑफ बुलेटिन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो ये सारे डेटा आप लोग याद करके रखिएगा. ओके, विद रिस्पेक्ट टू वेरियस जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, आरबीआई प्रोजेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 8%. ठीक है, देन एनएसओ प्रोजेक्शन with respect to fourth quarter is 5.9%, whereas RBI is projecting the fourth quarter growth rate to expand to 7.2%. तो इसी के बेसिस पर तो ये बोल रहे हैं कि 8% के हिसाब से मिल जाएगा हम लोग को ग्रोथ रेट. ठीक है, बट NSO is not that much confident about it. Outlook for financial year 25 we've already discussed because of in-house model. Similarly, another report, State of the Economy, which also get published, monthly and very frequently by the Reserve Bank of India, in which they talk about what's the current global economic situation is there. Okay, and similarly, if you see, apart from obviously various issues that the global economy is facing, the main thing that we need to learn about is this: GDP growth rate 7.4%. Income growth rate already understood, NSO projection. ठीक है, this is another important news. अब ये important news है in terms of investment in real estate or commercial real estate properties. This is India's first tokenization platform, especially in context of infrastructure. So India's first regulated infrastructure tokenization platform at GIFT City, obviously regulated by IFSCA. ठीक है, but what exactly is this platform? We'll look about it. ठीक है, I'll just give you one analogy that you already aware about. ठीक है, almost related to stock market. ठीक है, in which think about infrastructure properties worth let's say 1,000 crores. ठीक है, and by utilizing blockchain technology, you have actually broken down this whole amount into small tokens of let's say rupees 1 lakh. Okay, and these tokens obviously will be bought and sold on this infra tokenization platform. Thus enabling not only investment opportunities for buyers but even liquidity for these commercial properties. ठीक है, तो बेसिकली स्टॉक की तरह आप अज्यूम करके चले. ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह इनको टोकन्स में डिवाइड कर लिया. सिमिलरली 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको 1-1 लाख के टोकन्स में डिवाइड करके. ठीक है, अब वो टोकन्स थिंक अबाउट इट लाइक अ शेयर्स. ठीक है, जो आप एक प्लेटफॉर्म पर जाके खरीद बेच रहे हो. This is what is happening in context of tokenization platform also. These tokens enables the infrastructure companies to get more liquidity, and similarly also provides an opportunity for investors, especially retail investors that are not much more capable in investing high rate commercial properties. उनके लिए भी एक investment opportunity है, and this will inevitably increase the amount of liquidity flow in the infrastructure sector that recently the government also wants.
and especially if we put it in context of gift city, so that will also increase the foreign portfolio investment also, especially in infrastructure development. So any confusion in understanding what's the mechanism of this? हैप्पी होली विजन एंड वेंचर्स। दिक्कत है किसी को इस चीज को समझने में? पूछ लो अभी। ओ व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबको आगे समझ में? आस्क मी डाउट्स, ठीक है, पूछ लो, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद में फिर बाद में नहीं। तो ओनरशिप विल बी रिसीव्ड ना दीज टोकन्स, डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की व्हाट्स द स्पेशलिटी अबाउट इट, ठीक है, यू विल गेट द ओनरशिप ऑफ दीज टोकन्स, द पर्सन विल बी बाइंग दीज टोकन्स विल गेट द ओनरशिप। इट्स अनलाइक REITs, या REITs की तरह नहीं है, ठीक है। REITs में क्या होता था? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स? एनीवन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स द वेरी क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन REITs एंड टोकनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर टोकनाइजेशन? अगर आपको REITs का बेसिक मैकेनिज्म पता है, जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, REITs इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, ठीक है, देयर विल बी अ ट्रस्ट इन विच यू विल पुट मनी, इन्वेस्टर्स विल पुट मनी, ठीक है, देयर विल बी अ मैनेजर और यू कैन से ट्रस्ट मैनेजर दैट विल invest this whole money received by you to various investment projects. Isn't it? That's what the functionality of REITs is. और फिर यहाँ से जो भी रिटर्न मिलेगा in context of rent या फिर whenever this property is sold, whatever capital inflow is there, that will be given back to the investors of REITs. But इसमें ownership तो नहीं आई. Ownership is with this trust only. अगर वो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, इनके पास तो ओनरशिप नहीं है. But in case of infra tokenization, that whole property is divided into ₹1 lakh. ठीक है, अगर ये सब मिलाकर अगर आप खरीद लोगे तो you become the owner of this property. But अगर आप fractional इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फ्रैक्शनल ओनर हो जाओगे इस प्रॉपर्टी के. Isn't it? So now is this clear? The difference between REITs and infra tokens and how infra tokens provides liquidity, especially in the infrastructure domain. ठीक है. Now let's read the news. So the platform aims to tokenize real estate and infrastructure assets using blockchain technology. It facilitates fractional ownership for small investors. तो आपका ownership वाला डाउट खत्म, ठीक है? And provides liquidity to the global asset owners. IFSCA has conditionally approved entities to establish the platform. Real Dumb India, a member of NASSCOM, is one such entity undergoing regulatory innovation. तो इसका नाम याद करके रखिए. Platform operation, assets undergo due diligence, credit rating, valuation by chartered valuers. Basically जो भी obviously ऐसा तो है नहीं कि tokens चले गए और बिना किसी regulatory intervention के you will be able to buy and sell those things. ठीक है. First of all, as an investor, I also need to be very clear about what's the quality of that property is, where is that property is. तो वो सारी information कौन देगा? Credit rating agency usually provides rating with respect to those things. So all those things will be included. Tokens representing these assets are issued to investors, managed independently by custodians. Tokenization process, real estate
real assets converted into digital tokens, utilizes blockchain. Tokenized assets can be traded on digital platforms, enabling fractional ownership. ठीक है? Any confusion in this news to anyone? चलो, next is international news. So India invokes most favored nation clause, cuts royalty in fees for technical services, tax rates in treaty with Spain. ठीक है? So in this context, so this is just like a news, especially in context of double taxation avoidance agreement, in which India and Spain already had a double taxation avoidance agreement, in which there was one provision which was saying that if there are any royalty fees with respect to technical services, so that was previously 20% tax rate. माने इंडिया स्पेन की एक पहले से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट which was there, ठीक है, in which there was a provision with respect to royalty fees for technical services. Think about it like a Spain company establishing a software platform, ठीक है, an Indian company utilizing this platform called X, and to utilize this they are also paying royalty fees, ठीक है. So as per the treaty between India and Spain, this royalty fees will attract 20% taxation. So Indian government will be receiving 20% and 80% will go to Spain. तो ये तो पहले सिनेरियो था at that particular point of time, ठीक है. So the main thing was when India invokes most favored nation clause to Spain, a most favored nation clause, we'll understand, ठीक है. Most favored nation clause is also a very important principle in WTO agreements as well, ठीक है. उसमें की प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इफ यू आर गिविंग मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज टू एनी पार्टनर, ठीक है. यूजुअली आप जैसे इंडिया गिव्स मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज टू लेट्स से बांग्लादेश, लेट्स से टू श्रीलंका, लेट्स से टू मॉरिशस, लेट्स से टू स्पेन, लेट्स से टू सम अदर यूरोपियन कंट्रीज. तो उसमें प्रिंसिपल क्या होता है, वट एवर facilities or whatever concessions related to trade you are providing to any country having most favored nation from you, you have to provide the same concession to every other country. Think about it. For example, that if you are, let's say, charging 20% to Spain, okay, for royalty fees. So if you're, if you're doing any agreement with another nation which also have MFN status given by you, तो आप उसको 20% से ज़्यादा नहीं टैक्स मांग सकते, सेम आपको रखना पड़ेगा, ठीक है. यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी व्हेन यू हैव प्रोवाइडेड MFN स्टेटस टू कंट्रीज, ठीक है. तो ये है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, इंडिया एंड जर्मनी also recently had a double taxation avoidance agreement. So in that agreement 10% royalty fees was the norm back then, ठीक है. और जर्मनी के पास मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज था, तो 10% उनको रॉयल्टी फीस करते थे. फिर स्पेन के साथ जब अग्रीमेंट हुआ और जब इनको MFN स्टेटस प्रोवाइड किया, तो नेचुरली दिस परसेंटेज ऑफ 20%, अब इसका क्या होगा, कैन एनीवन टेल, बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट विल हैपन टू दिस 20%?
शुड बी रिड्यूस टू 10%. यस, करेक्ट, बहुत बढ़िया. ठीक है, वाई? बिकॉज when you provide MFN status to both countries, you cannot discriminate between different taxations. ठीक है, तो 10% अगर आपने इनको दिया है तो उतना ही इनको भी मिलेगा, या तो फिर इनको भी 20 करो, सेम होना चाहिए. अब 20 तो इनको कर नहीं सकते क्योंकि दिया ही आपने 10%, तो इनका भी थोड़ा रिड्यूस कीजिए. That's what the news is telling you. India has revised its double taxation avoidance agreement with Spain, reducing tax rate on royalty and fees for technical services. New tax will not exceed 10%, which previously was 20%. And this came in accordance with most favored nation clause, which ensure that OECD members receive similar tax treatment as per treaties with India. Any confusion in this to anyone? नहीं है किसी को डाउट? आई होप क्लियर हो गया. ये किसी सेम डोमेन के लिए होगा, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन. बेसिकली ऐसा है ना कि थिंक अबाउट, यू हैव प्रोवाइडेड MFN स्टेटस टू स्पेन, या आपने इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ले लेता हूँ, OECD मेंबर्स को दे रखा है. ठीक है, India or any member OECD will be having. So yes, it is correct. It is irrespective of domain, or especially if you focus on it is irrespective of any sector, or it is irrespective of any economic activity. तो basically अगर आप let's say royalty for technical fees दे रहे हो, ठीक है, वो भी सेम होनी चाहिए. अगर आप let's say स्टील के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हो, वो भी सेम होना चाहिए. मतलब एटलीस्ट अलग नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मतलब आपने स्टील की ड्यूटी के साथ अग्रीमेंट किया जर्मनी के साथ, तो आप खामखा स्पेन के साथ भी कर रहे हो. नहीं, इट्स जस्ट अ रूल कि जब भी आप स्पेन के साथ सेम चीज पर ड्यूटी का अग्रीमेंट करो, तो आप जो टैक्सेशन है उसको सेम रखना. इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने एक कंट्री के साथ एक कमोडिटी के लिए ट्रांजैक्शन किया तो दूसरे के साथ कंपल्सरीली इट इज यू हैव टू डू द सेम थिंग. Whenever the need arises, you do not have to change the tax rates. ठीक है, वो सेम रखने हैं. So is this clear? तो वो ओवरऑल ट्रेड बेसिस पर है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे या फिर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी लाइक ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज. Yes, no, clear? चलो, let's move on. Next is reports India ranks 126th on Global Happiness Index. ठीक है, 126th out of 143 nations in the World Happiness Report. Finland emerged as the happiest country. The report is released by United Nations Sustainable Development Solutions Network, Gallup and Oxford Wellbeing Research Center. ठीक है, तीनों का नाम याद करके रखना because it is very easy to remember this first name. अगर क्वेश्चन आ गया कि दिस और फिर एक स्पेस ब्लैंक दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ओके, एंड द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट विल बी डूइंग इन अ सिंगल सेशन, जैसे हम लोगों ने पिछली रिपोर्ट करी थी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑल RBI ओम्बड्समैन, तो उस हिसाब से विल बी डूइंग दिस हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑल्सो. नेक्स्ट इज, अब ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है विच आई वॉज टेलिंग यू अबाउट. India to produce 600 kilotons of solar waste by 2030. Okay. Approximately in 22-23 financial year, India produced 100 kilotons of solar waste. And this is the report released by Ministry of New and Renewable Energy and researchers from Council on Energy, Environment and Water. अब मिनिस्ट्री की निकाली गई रिपोर्ट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फेज 2. ठीक है, फेज 1 में भी आ सकती है. इट्स वेरी प्रोबेबल दैट इट कैन कम इन फेज 1, बट फेज 2 के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन ESI सेगमेंट.
Okay, the report title, Enabling a Circular Economy in India's Solar Industry, Assessing the Solar Waste Quantum. You know, all of us understands that how much solar energy is important in context of transitioning towards cleaner energy. Okay, but it is also important for us to recycle the solar waste, because then that thing will become a different problem altogether. The report says that India's current solar capacity is 67.7 gigawatt, which is set to grow at 292 gigawatt by 2030. तो जैसे जैसे solar capacity will increase, our tendency to increased solar waste that will also increase. ठीक है? Now what is solar waste? It includes waste generated during solar module manufacturing and waste accumulated during the module's life cycle. तो बेसिकली अगर आप इंजन भी बनाते हो ना, आप लोगों ने कभी लेथ मशीन देखी है, कोई सीएनसी मशीन देखी है आप लोगों ने? हैज एनीवन सीन अ सीएनसी मशीन, a lathe machine, anything like that? How many of you have seen? तो बेसिकली होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट कि ये कास्ट मॉडल है ना, बेसिकली इसको कास्टिंग करके एक मॉडल बनाया, ठीक है। फिर जब आप इसकी मशीनिंग करते हो इंजन के लिए, तो इसमें बहुत सारे होल्स हो रखे होते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो मेटल रिमूव किया गया वो कहाँ गया? दैट मेटल बिकम्स वेस्ट। तो वो इस तरीके से उसकी बहुत सारे small pins gets generated after manufacturing of these such type of commodities or engines, ठीक है। So that's what the same thing happens in case of solar panels as well. Solar panels भी तो आपको एक शेप में मिलते हैं, अब क्या वो शेप में ही प्रोड्यूस होते हैं? इनिशियली वो शेप में कट किए जाते हैं, है ना। तो उसके पास जो थ्रेड्स निकल के आते हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स वेस्ट। और फिर उसका डिस्पोजल इज नॉट ईजी। So that's why this is what the report was focusing upon, that while manufacturing solar panels we produce a lot of solar waste, ठीक है। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का वेस्ट। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर द सोलर पैनल्स लाइफ साइकिल एंड? तो फिर उसका क्या करोगे? जस्ट लाइक हाउ इट हैपेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोन्स एज वेल। आप लोग फोन यूज करके एट द एंड क्या करते हो उसका? यस, मशीनिंग में भी वेस्ट होता है, करेक्ट। हाँ, दैट कैन बी मेल्टेड बिकॉज वी हैव अ प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, ठीक है। तो फिर वो प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, ठीक है। एंड इट इज नॉट ओनली, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक स्क्रैप इंडस्ट्री हमें बनानी पड़ेगी सो एज टू रीयूटिलाइज द कंटेंट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एज अ सोलर वेस्ट। क्योंकि फोन आप फेंक देते हो, फोन फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि फोन में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। अगर वो बर्न हो गया तो उसमें बहुत दिक्कत है, ठीक है। यूजुअली इफ पॉसिबल, ठीक है, आप एक्सचेंज कर लो। जब भी नया फ़ोन खरीदना है, आपको पता है कि मैं फ़ोन ये डंप करने वाला ही हूँ, तो आप एक्सचेंज कर लो। आपको कुछ नहीं तो 1000 रुपये मिल ही जाएगा, नहीं मिले तो नहीं मिले, एटलीस्ट इट इज़ गेटिंग डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, बिकॉज दीज फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव अ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। Just give me a sec.
Next is another findings of the study. Okay, so by 2030 India's current solar capacity will generate around 340 kiloton of waste. ठीक है, and it is about current solar capacity, क्योंकि current solar capacity will be utilized further on. ठीक है, फिर वो भी डंप होगी, तो उस सोलार कैपेसिटी से हम लोग का कितना वेस्ट जनरेट होगा, 340 किलोटन. बट एज वी ऑल नो दैट सोलार कैपेसिटी इज कंटिन्यूसली बीइंग इंक्रीज्ड, सो if you cumulatively check, that will be around 600 kilotons by 2030 and 19,000 kilotons by 2050, and this is a normal projection which all of you understands because solar capacity will hugely increase, and approximately 67% of this waste will be expected from 5 states: Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. तो ये 5 स्टेट भी आप लोग याद करके रखिए. ठीक है. Another important thing is that every solar module have a 25-year life cycle. Okay, so just remember these key facts over there. Next is MOU. Dhanuka Agritech signed an MOU with ICAR for tech demos. Okay, basically it's an agriculture tech startup signed an MOU with Indian Council of Agricultural Research so that they can use KVK's land, okay, for demonstrating technologies in context of seeds, nutrient and agrochemicals for farmers. इसी तरीके के पूछे जाते हैं, अगर आप एग्जाम्पल भी देखोगे पिछले साल या उसके पिछले साल. ठीक है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. उन्होंने किसी कंपनी का आईकार के साथ कोई MOU हुआ है, वही सब पूछा हुआ है. लास्ट 21st March International Day of Forests या फिर World Forestry Day, the theme being Forest and Innovation, New Solutions for a Better World. Okay, so this is all for today. If you have any questions, feel free to ask, otherwise we'll wind up the session. No question? चलो ठीक है. So thank you guys for joining. We'll meet in the next session. ठीक है, till then keep revising.